अभी ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. आई एम गोइंग टू एब्सोल्युटली शॉक यू. Amazon की जो रिपब्लिक डे सेल है विच विल स्टार्ट इन अ फ्यू डेज, राइट? आप सब वेट कर रहे हैं. बिग ह्यूज सेल, बेस्ट फोन्स, इनक्रेडिबल प्राइसेस. कुछ दिनों में शुरू होगी, राइट? रॉन्ग. इट स्टार्ट्स राइट नाउ. यहीं पे शुरू होने वाली है विद मी राइट हियर. Right now on this live stream मैं रिवील करूंगा all the sale prices of all the phones, big ones, all out here. और एंड में a shocking bonus surprise. And when I say shocking bonus surprise, I mean it. Welcome back to this very special live with me, Rajiv Makhni. बड़ा special live stream है out here on Amazon क्योंकि live जो है ना, is a very exciting format. I've just started today with the first one और यहाँ पे already I'm doing round 2 on Amazon. Kyunki the incredible number of you that tuned into the first one. So thank you so much to all of you for the incredible love or support जो आपने हमको दिखाया during my first ever live stream. But now get ready for round 2 right now. Remember, special prices, special deals जुग जाएंगी live tonight. सारे का सारा खुलासा मैं कर दूंगा अभी ही. Amazon Great Republic Day sale starts at midnight. Prime members के लिए सिर्फ, and the sale runs till the 20th. लेकिन आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं. जितने amazing phones हैं, I'm going to reveal all the prices right now. And like I said, I'm going to reveal a big shocking surprise at the end. तो ये है मेरा promise for all the Amazon live that I'm going to be doing out here. ये जो Amazon live stream है with me, Rajiv Makhni, it's going to be very different from all the others. देखो, इंग्लिश में कहते हैं ना, you're on a quest, you're on a crusade, यानी कि एक मैंने टेक युद्ध शुरू किया है. इतना सारा टेक्नोलॉजी आजकल हमारी तरफ आता है फ्रॉम ऑल फोर साइड, राइट? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब तरीके से वी गेट न्यू टेक, न्यू लॉन्चेस. हर कंपनी बोलती है भाई हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है. बट हाउ डू यू कम टू नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट? हाउ डू यू मेक अप योर माइंड के अगर सब कंपनी बोल रही है कि हमारा फोन एट दिस प्राइस इज द बेस्ट, हाउ डू यू मेक दैट चॉइस? तो ये मेरा प्रॉमिस. I am actually going to make sure that right here on my live streams, I will tell you the best product at the best price, which is best for you, especially for you. क्योंकि यही फायदा है live stream का. You can actually ask me questions. I can answer those questions. एक dialogue बन जाता है between you and me, rather than just doing a video जहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ but you cannot have any interaction with me. Here we can talk to each other. So यहाँ पे मेरा ये promise है that I'll only bring you the best products. Product जिनको मैंने review किया है, जिनको मैंने test किया है, try किया है, torture किया है, only those will be brought here, and even then I'll tell you the good and bad in each. लेकिन आज का आपने टाइटल तो देख ही लिया. मैं बात करूंगा today of 5 super crazy deals on the best 5G smartphones in India. तो पहले तो let's get about the 5G part, right? देखिए, everyone wants a 5G smartphone. If you're hunt for a new phone, it's got to be 5G क्योंकि 5G है future. बट यू नो, सिर्फ 5G को एक बाइंग क्राइटेरिया रख के अगर आप फोन खरीदेंगे तो आप बहुत गलत फोन खरीदेंगे. 5G के साथ यू नीड टू लुक टू एट अ लॉट मोर थिंग्स. द बेस्ट फोन जो आपकी प्राइस रेंज में है, व्हाट आर द अदर सुपर ऑसम फीचर्स, कैमरा कैसा है उसका, क्या उन्होंने 5G एट अ लोअर प्राइस में देने के चक्कर में बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर दिया? डिड दे गिव यू अ मच वर्स स्क्रीन, डिड दे गिव यू अ मच वर्स बैटरी? प्रोसेसर के साथ उन्होंने कुछ जो है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर दिया. तो 5G के चक्कर में सिर्फ मत पड़िए. यू गॉट टू टेक अ लुक एट द बेस्ट at that price point with 5G. Super value for money, bang for buck, really good phones. वो कौन से हैं? Well, I'll start off with 5 of them. लेकिन remember, the other part that I've told you, a super shocking surprise at the end. And in सब के prices जो हैं Republic Day sale की for Amazon, the Great Republic Day sale, I will reveal it right now. So let's get started. And once again, all the prices जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, these are not the ones that you'll be seeing on Amazon right now. मैं आपको special prices reveal कर दूंगा that will go live tonight on the Amazon Great Republic Day sale. Midnight for Prime members. Sale जो है will run till the 20th. And like I said again and again, you know, जो shocking surprise है, that is actually एक ऐसा aspiration है for people that really want that phone, that category of phones, and now that price will be such कि आप shock हो जाएंगे. Almost everyone can start. जो आपका dream phone है, I will reveal the price for that also. लेकिन do remember, all this fun and deals is only for Prime members. तो अगर आप एक नहीं है, you will miss out on these early deals, early prices. You know, they say ना, early bird gets the worm. And the subscription reminds me, आप जो देख रहे हैं ना, you're seeing
following me right now, मेरे पेज पे या कहीं पे भी उस वीडियो पे बस एक बार टैप कर दीजिए, then you'll see a plus follow button out there, yellow color में. Do follow me because like I said on these live streams, I'm going to make your tech life very, very easy. Crazy deals, amazing things on Amazon that no one else will tell you. ऐसी technology, ऐसे gadgets, ऐसे accessories that you did not even know existed at prices you did not know were possible will all come on this live stream. And you'll only know it when you come and follow me here. वो dialogue जो है, let's get started with that. So there will be a lot more we'll be doing, but right now let's get started with what I'm here for. So make that follow button happen, and I'm starting right now. तो टाइम फॉर द फर्स्ट फोन रिवील, और ये है Realme का Narzo 50 Pro 5G. You know, Sharon is going to join me out here to do a few very, very stylish close-ups. So I'm going to put the phone down out here, and while I'm talking, he's going to be taking a look at this phone. So पहले I just want to show you that this is a very, very interesting phone. Mid-range का phone है. The competition in this particular market, this category, is very, very stiff. लेकिन Realme Narzo 50 Pro 5G जो है, may well be the value champion. So I'm going to just find out because you know, Sharun जो है, he actually does a lot of B-roll. B-roll वो होता है जिसमें हम close up करते हैं, जिसमें हम लोग जो हैं, we get into things like, you know, how does the phone look, what is the look from inside out. तो शरून बताओ मेरे को, आपने तो इतने सारे बी रोल शूट किए हैं लाइफ में. 5000 फोन इज व्हाट यू वर क्लेमिंग. थोड़ा झूठ बोल रहे थे, लेकिन 5000 के आसपास इज आई थिंक व्हाट ही थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन, थोड़ा मतलब 4999. या ऑलमोस्ट लाइक दैट. तो शरून का मैं आपको बता दूं पहले कि भाई थोड़ा सा डर भी रहा हूं टू इंट्रोड्यूस हिम इनटू दिस बिकॉज़ ही इज डूइंग द एंटायर लाइव विद मी आल्सो. बी रोल भी कर रहे हैं, क्लोजअप्स भी कर रहे हैं. शरून की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, इनको आप एक सवाल पूछो तो ये 8-9 सवालों का जवाब दे देते हैं. तो शरून मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ. आई विल ट्राई. ये मैंने बोला था, देयर इज नो स्टॉपिंग हिम. सो दिस फोन जब आपने पहली बार यू हैड डन द बी रोल, आई रिमेंबर यू टेलिंग मी दैट how is this phone priced like this? बहुत premium looking phone. Exactly. At this price, when the price got revealed, I was a little shocked. On it looks very premium. The B-rolls actually came out very well. That's also because of the camera. Okay, sure. Thank you. मतलब मैंने सिर्फ पूछना था कि you were impressed with it at that time. दो चार लाइनें और नहीं कोई नहीं. I mean we'll keep talking to you. So why don't we now come back to showing the phone while I talk about it. तो mid-range section का phone है. The competition, like I said, इस particular price point में is very, very stiff. लेकिन Realme Narzo 50 Pro 5G बड़ा लंबा नाम है, लेकिन इसके काम भी बहुत लंबे हैं. ये बड़ा वैल्यू चैंपियन है. नाउ आई नो दैट द नेम इज वेरी लॉन्ग, बट इज द स्पेक शीट एज लॉन्ग? यस इट इज. सबसे पहले, लाइक आई टोल्ड यू, द लुक ऑफ द फोन. यू विल नोटिस इट फर्स्ट स्ट्रेट अवे, द ब्यूटिफुल टेक्सचर्ड बैक. Absolutely fantastic back. Sharon, you want to catch that back again while I talk about the phone? So absolutely fantastic back, and it's a very, very light phone, extremely lightweight, weighs only 181 grams. और जो thickness है, you know, it feels like जैसे कि ये phone जो है, I'm going to show it to you right here. It feels like it's on intermittent fasting कर रहा है ये phone, because इतने features के साथ, look at how thin this phone is. 7.9 mm only. फिर उन्होंने इसमें डाला है MediaTek का Dimensity 925 processor. Now we are back to 5G, right? And remember, जब भी आप 5G का फोन खरीदते हैं, here's a pro tip. Make sure कि जो पुराने 5G phones हैं that were launched prior to, क्योंकि इंडिया में 5G phones बिकने शुरू हो गए बहुत जल्दी, और इंडिया के जो 5G bands हैं वो अनाउंस हुए बाद में. Make sure that those phones that you are buying that were pre 5G launch in India, वो इंडिया के 5G पे चलते हैं. एंड ऑल्सो व्हेन यू टेक इट आउट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यू आर नॉट ओनली गोइंग टू बी ट्रैवलिंग एंड यूजिंग दिस ओनली इन इंडिया, सपोज यू टेक इट टू अनदर कंट्री अब्रॉड, तो वहाँ के 5G पे भी चलेगा कि नहीं. एंड दिस इज समथिंग आई विल ऑलवेज बी क्लैरिफाइंग व्हेनेवर आई टॉक. कभी मैं आपको कोई फोन के बारे में बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको कि इज दिस अ फोन जिसका 5G बैंड जो है वर्क्स ऑन एवरीथिंग. वेल, दिस वन डज. And you know, it's actually blowing past most devices in this price range. Higher price भी जो है ना, they are not able to come up with the performance of this phone. इसका जो AnTuTu score है, and AnTuTu is a very important way जो app हम लोग use करते हैं to check the performance of the hardware of the phone. The only thing that you really, really want is कि अगर AnTuTu score इसका जो 500,000, 5 लाख का है, that is what you're getting out there. So this is absolutely fantastic. इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं. there's no problem with gaming also on this phone. Only thing you may have to fix in this is your aim. बाकी फोन सब कुछ कर देगा, इसमें कोई लैग नहीं आएगा. आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी गेमिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. नाउ
पतला 7.9 mm फोन, लाइक सुपर ब्लेड थिन फोन है. 5000 mAh की बैटरी, 33 watt का डार्ट चार्ज टेक्नोलॉजी. एंड द ओनली वे योर पेरेंट्स माइट स्पीक टू यू इज इफ दे ड्रॉप in game with you, because एक बार आप शुरू हो गए at this phone, you will be using this phone all the time. The other part that I totally love is Super AMOLED display. Sharp hair, really, really good for multimedia, for gaming. 90 Hz display hai, butter smooth display hai. And how much RAM does it have? You know, if you're asking me that question, मैं आपको बताऊं इस फोन में है 13 GB, 13 GB. Now you're saying, how is that possible? Not at this price point. देखिए दो वेरिएंट आते हैं, 6 GB प्लस 5 GB डायनामिक रैम, और एक है 8 GB प्लस 5 GB डायनामिक रैम. सो टोटल ऑफ दैट वन इज 13 GB. तो अगर आप अपनी मैथ ठीक से कर रहे हैं, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव कम टू 13 GB. और दोनों वेरिएंट्स में 128 GB ऑफ स्टोरेज वो लोग दे रहे हैं. सो यू नॉट गोना रन आउट ऑफ स्टोरेज फॉर योर प्रेशियस स्क्रीनशॉट्स एंड फोटोज एंड इवन गेम्स. जैसे मैंने आपको बताया 5G रेडी है, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है इसमें, क्रिस्टल क्लियर साउंड, कैमरा इज आल्सो अ ट्रिपल सेंसर 48 मेगापिक्सल, क्रिस्प गुड फोटोज ऑन दिस वन. लेकिन एक बहुत ही स्पेशल फीचर आई एम गोना टेल यू नाउ, एंड दैट इज अ कूलिंग सिस्टम दैट इज बिल्ट इन. यू नो, a lot of people don't really think much about कि एक फोन जो है एक बार वो खरीद लेते हैं for looks or for screen or everything, they're like, okay great, I bought this phone, it's absolutely fantastic. जब वो यूज करना शुरू करते हैं, they use Google Map in the car, they play let's say a game for about an hour or something, they open various apps on it, क्रोम पे बहुत सारे टैब्स खोल देते हैं, द फोन स्टार्ट्स टू हीट अप. सेकंड टाइम दे विल फाइंड इट इज व्हेन दे आर चार्जिंग द बैटरी, इट स्टार्ट्स टू हीट अप. इसमें 5 लेयर की कूलिंग टेक्नोलॉजी है दैट्स गोइंग टू रिड्यूस द डिवाइस का कोर टेम्परेचर बाय अप टू 10 degrees Celsius. इसका मतलब दिस फोन विल नॉट ओवरहीट. एंड दिस इज समथिंग अगेन याद रखें, ये सारे के सारे फोन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, these have been tried, tested, reviewed, tortured by me, so that's the reason I've chosen these 5. जबकि हमारे पास 5G में I think I have about 45-50 phones, but each of these is really good in its price point. So you're really getting a great phone. You know, the overall Narzo की एक बहुत interesting कहानी ये है कि when the first phone started coming out, they were going in a completely different direction. They wanted to make Narzo their top of the line phones. लेकिन with this phone they realized that the Realme Narzo 50 Pro 5G can be a super value phone. And what do you think the price is going to be? थोड़ा सा आपको ना मैं गेस करने का टाइम देता हूं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी क्वाइट शॉक्ड. जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, यू विल बी थिंकिंग ओके मिनिमम ये 17-18 हजार रुपए का तो फोन होगा. नो, that's not the price. The phone price is now going to be 14,999. I just heard Sharun say no. Yeah, so he's saying not possible because जब इन्होंने पहले B roll किया था, at that time the phone was much more expensive. Okay, so this makes this a great phone at an unbelievable price. So put it in your cart right now. This one will sell out very soon. Remember, sale jo hai at this price point starts off at midnight for Prime members and runs on till 20th of January. So get yours now in the cart and be ready at 11:59. और याद रखें, you've got to follow me. Just touch that screen, follow button आ जाएगा वहां पे, plus follow me because all these amazing deals and all will be coming exclusively out here. And one more big surprise coming up right at the end. ये 5 फोन तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक छठा फोन भी है, and that is going to shock you. So stay tuned till the end. Meanwhile, I'm going to move on now to the Redmi Note to the Redmi Note 12. Now, Redmi Note जो है sold 300 million phones till now. आप सोच सकते हैं 300 million phones कितने होते हैं? 30 करोड़ फोन वो बेच चुके हैं just in the Note series. और जो Redmi Note का जब लॉन्च होता है ना, to many people in India, it is a bigger launch event than the iPhone launch. क्योंकि this is the phone they've been waiting for all year. So Redmi Note का 12 जो है, ये जो उनका है starter base classic model है, lots of people very excited about it. It's one of the hottest phones on the market, quite difficult to get. Fresh phone launch है, it's just launched right now. कितने सारे budget phones हैं that can promise a 6nm chip for the performance. आप बोलेंगे यार फिर वही ना, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जब बात करते हैं बड़ा बोर कर देते हैं आपको. अब ये 6nm का क्या चक्कर है? इसके अंदर उन्होंने दिया है स्नैपड्रैगन का 4th जनरेशन 1 चिपसेट, सुपर पावरफुल डेली यूजेज के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, गेमिंग के लिए, एवरीथिंग. और जो एनएम की मैंने बात की, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूं. व्हाइल आई थिंक Sharon, I'm going to leave the phone here for you to show everybody how good it looks. I'll
keep it out here. इसमें जो double shading आ रही है, the way they put the camera around out here. Can you see the double shading? Can you capture that in the light? Looks good, amazing. We have done a little bit of B-roll of this. Yeah, right. So just take a look at it, and while I talk about the phone. तो ये जो NM होता है ना, this is the way the architecture, जो chip है inside, जो processor है Snapdragon का, how it is built. जितने NM कम होते जाते हैं, that means the phone will run cooler, will give you better technology, better battery, much more powerful performance, because the overall heating of the phone dramatically comes down. इसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने display भी दिया है. Can I show the display? Okay. So this display is a big one, 6.67 inch का है. LCD पैनल होता है यूजली, बट Redmi Note 12 में उन्होंने AMOLED डिस्प्ले दिया है. वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट, वेरी इंप्रेसिव. और AMOLED डिस्प्ले के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, आई हैव टू टेल यू दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रिमेंबर इज के AMOLED डिस्प्ले आते ही यू आर गेटिंग स्मूथ, फास्ट, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस. एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, ब्लैक्स आर ब्लैकर, you know, the brightness is fantastic. लेकिन AMOLED का सबसे बड़ा फायदा है that if you actually use dark mode, you use dark, overall wallpapers and everything else, you will be shocked at the amount of battery life that jumps up. क्योंकि AMOLED में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि black को दिखाने के लिए it does not have to have that actual pixel up and about and lit up. It can do it by just going dark black. बहुत फर्क पड़ता है dark mode में, तो it is an absolute revolution. 48 megapixel triple camera tha. I think when Sharon was shooting this, you could have seen that legend out there. 48 megapixel triple camera, and the price point it comes in is super impressive. I'm going to reveal that to you. 5G ready phone hai. You can take advantage of super fast speeds. Battery is very impressive. 5000 mAh की battery again. I've started to wonder, ये जो modern phones आजकल बन रहे हैं, how are they fitting a 5000 mAh battery? 7.98 mm thick, I should say thin. 33 watt charger is in the box. 120 hertz का इसमें refresh rate है. Most phones at this price point give you 60, some give you a 90 hertz, लेकिन 120 I think is fantastic at this price point. And मैंने आपको बताया about Redmi Note, ये जिस तरीके का फोन इन्होंने बनाया है, जब सबसे पहले नोट सीरीज शुरू हुई थी रेडमी की, they created an absolute sensation, and like I said, lot of people wait for the annual update, और इस बार I think they've done an absolutely great job, especially with the base one. So super phone, super note. What's the super deal price? आपको मैं इतना बता दूं, देखो ये फोन अभी अभी लॉन्च हुआ है. इट्स जस्ट लॉन्च्ड एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट दिस फोन. इट्स इन सच ह्यूज डिमांड, बट ऑलरेडी जस्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पे Amazon की जो ग्रेट रिपब्लिक डे सेल शुरू होने वाली है, आई थिंक they've just collaborated for that, and they're giving this phone now at a reduced price of 16,499 for a brand new Redmi Note 12. Is your mind blown? Because वो क्या होता है जो memes like my mind is blown. ये फोन अभी अभी निकला है, and already Amazon and Redmi and Xiaomi have worked out a deal के यार देखो midnight में प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ तो करना है, आप करो, and they have done it. It's amazing. Already a reduced price for a phone that is difficult to get. I think that's quite amazing. Remember, sales shuru hogi midnight for Prime members, so you can put it in your cart and hopefully it's going to be there, not sold out. वो FOMO के चक्कर में भूल मत जाना. It's only on till the 20th of January and starts at midnight. And I want you to do one more very important thing. जो follow button है, how do you get to the follow button? The screen that you're seeing me on right now, that little video that you're seeing in that rectangle, वहीं पे भी tap करिए. You'll get a plus follow button, yellow color में. Make sure you follow, because if you don't, the kind of live streams I'm going to be doing, the deals, the incredible offers, the kind of giveaways, everything I'm going to be doing, आप miss out कर जाएंगे. So the best of the best will come when you follow me. Most importantly, I think to also interact with you. जो questions हैं आपके, and I know that a lot of questions are already starting to come in. Social media में भी बहुत सारे questions आए थे. I will take a lot of questions are coming in right now. But I think it's very important that we keep this dialogue going. So press that yellow button and don't miss my lives at all. आगे चलते हैं now, and do remember, 5 फोन हैं, 2 हो गए हैं, 3 और हैं यहाँ पे, and the big surprise is the 6th one. It is not a surprise. Change it around. It's the big shocking surprise. लेकिन now I'm going to a phone which is in the Samsung S series, but it is the S20 FE 5G. अब आप बोलेंगे अरे 2 साल पुराना फोन? Well, stop wondering, because I'm going to tell you that this phone provide करता है crazy amount of performance and an even crazier amount of
वैल्यू जब मैं इस प्राइस का, जब मैं आपको इस फोन का प्राइस एंड वैल्यू रिवील करूंगा, यू विल बी टेलिंग मी दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर गेटिंग एन एस सीरीज फोन at a price point that you do not get budget phones. So wait for it. I'm going to totally shock you. Like, this is not the only shock. Remember, sixth phone is also a big shocker. So Sharon, you want to show everybody the phone while I talk about it? So there it is. Looks amazing. तो जो FE है ना, इसके बड़े 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 लोगों ने सोचा कि ये FE का मतलब क्या है. फाइनली सैमसंग ने बताया that this is the fan edition. जो रेगुलर S सीरीज है, S20 जो फोन था, वो बहुत बड़ा हिट था. And everybody wanted to buy that phone. It was an absolutely fantastic phone and one of the best S series phone and continues to be. अगर आज भी आप S20 series phone खरीदते हैं, it is fantastic. तो idea behind this phone was very very simple, that all you need is take the regular जो flagship S20 है, उसमें कोई ज्यादा और चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, थोड़ा लुक्स में, थोड़ा एक दो चीजों में माइनर ट्वीक्स. Move the internals to Glastic, the externals also to Glastic. Yes, I said it, Glastic, यानी कि Glastic body, glass और plastic की body है. And release a lower, more affordable price point. And affordable price point की बात करते हुए मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि S series का फोन इस प्राइस पे मिलेगा. I'm going to give you a secret. I'm supposed to actually tell you only after I've spoken about the phone, but I'm too excited. Can you imagine Samsung का S series phone at a price less than 30,000 rupees? I didn't think it was ever going to be possible. Lekin, it is possible, and I will tell you the exact price, but I said I'm just bursting with it, so I'm going to tell you, right? So, screen 2 साल पहले उन्होंने निकाली, phenomenal 6.5 inch super AMOLED display. So that means जो आजकल के फ्लैगशिप्स हैं और इसमें कोई फर्क नहीं. 120 Hz refresh rate, यानी कि आजकल के फोन and a phone from 2 years back, कोई डिफरेंस नहीं. HDR10 प्लस, अगेन द सेम. देखिए सैमसंग की स्क्रीन है, यू नो यू कांट फाइंड अ फॉल्ट इन इट, सो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. फिर ट्रिपल कैमरा है इसमें, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, वीडियो रिकॉर्डिंग एट 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड है, स्पेस जूम है, फ्लैगशिप फीचर फ्रॉम द रेगुलर S20. सैमसंग का मोस्ट एडवांस जूम है. It allows you to zoom 30x on your phone's camera. So essentially no real loss of image quality. और आप 30x जा रहे हैं, just please don't spy on your neighbors, right? Because उनको फिर पसंद नहीं आएगी ये बात, right? तो zero complaints for the specs. मैंने जितने specs आपको बताइए कौन सा ऐसा spec आपको लगा that is 2 years old. इसमें इन्होंने AKG के स्टीरियो स्पीकर्स भी दे दिए हैं, ग्रेट साउंड क्वालिटी, पोर्टेबल स्पीकर की कोई जरूरत नहीं, ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत नहीं. दिस एक्चुअली गोज वेरी वेरी राउट. फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, which is very tough, so drop it, throw it, it will actually last. And if you actually have something like, the entire idea ke, I've always wanted a Samsung S series, but I can never afford it. I've already told you, this is a phone that is on fire. Internals देखिए आप इसके, 3 वेरिएंट्स हैं, 6GB plus 128, 8GB plus 128 and 8GB plus 256. Powered by the Snapdragon 865 5G. So you are 5G ready also. You can zoom through the UI. Your gaming needs are covered totally. Charging speed remains, charging की जो इसकी speed है that remains good, 25 watts का है. Everything is super quick, and then add the 4500 mAh battery. So again you're doing absolutely fantastic. 4.5 watt reverse charging भी है, and that in some flagship phones right now वो अभी भी नहीं आया है, इसमें उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया. इट कैन चार्ज somebody else's phone as well, as you can charge your TWS earbuds on it अगर उसमें है वायरलेस चार्जिंग का. सो दिस इज फैंटास्टिक. और सैमसंग इज ग्रेट, अपडेट जो उनके साइकिल हैं दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. समटाइम्स गूगल से पहले सैमसंग के आपको जो है अपडेट्स मिल जाते हैं. इज रनिंग Android 13 on it already, so it will support the big Android updates whenever they release. And just in case you were wondering, इसमें चार्जर इज इन द बॉक्स. वो टाइम था ना, वो जमाने थे जब सैमसंग चार्जर डब्बे में डालता था. इसमें आपको चार्जर डब्बे में मिलेगा. And 3 awesome colors also. You can choose from Cloud Mint, Navy Blue and Cloud Lavender. So you can match your style however you please. Looks really good. मैंने आपको बताया था ना कि you're going to be shocked about it. मैंने already 30,000 का price point तो बता दिया. This is under. So flagship level phone है with current flagships. Flagship grade performance है. All the great stuff, whether it's the screen or the performance. The price point under 30,000 rupees. The Samsung S20 FE is 29,999.
So we just had a little bit of a wow from the crew. Remember, all of you, it's only happening at midnight. Abhi jaake suddenly camera ko abandon mat kar dena. We still have the live stream going on. It's going to happen at midnight, so you can all still get it. I think this is an absolute steal deal, and it's only for Prime members. आज रात 12 बजे जो है सेल खुल जाएगी. At that price point, it will go on till 20th of January. So put it in your cart and hopefully they don't run out. You can get yours. And remember, follow me. Just tap on that screen. The plus follow button will open in yellow. और आप जो है मुझे follow ज़रूर करें. So much more to do in the future and right now. And remember that big 6th surprise is coming up. चलो, now let's take the ante up a bit. कुछ super hot phones के बारे में बात करते हैं. We are getting lot of questions. Okay, you're getting a lot of questions. Okay, let's get started with this. Okay, already people are saying कि इतने सारे amazing phones हैं, which is the best one to buy? I really like your explanation. 256GB model है. Okay, so many more. अच्छा, Rajiv must है. हाँ, thank you so much, sir. Thank you very much. So lots and lots of questions coming in. I'll show them that there are actually questions coming in. Okay, sure. Here you go. This is lots more that is coming out here. जो इतने सारे questions already आ गए हैं, I am going to try and answer some of them in between because there are way too many, I think. So people are saying कि मैं OnePlus का एक phone का डब्बा देख रहा हूँ यहाँ पे. जी हाँ, there is a OnePlus. And a lot of people are asking कि iQOO 11 जो आज launch हुआ है, आज ही launch हुआ है सुबह at a great price. उस पे भी is there a deal? Yes, there is. So lots of things coming in. And some of them are saying कि iPhone भी आएगा क्या? You know, maybe the surprise is that one. Okay, but now I'm going to move on right now to coming back to the phones out here. Lots of people asking about the red box out here. So let's move on to that one. ये वो segment है where I'm going to talk about two crazy flagship killer phones. Both phones are priced at around 50,000. लेकिन what price can I bring them to you? You're going to be absolutely shocked. So very quickly, let's move on now to the OnePlus 10T. I'm going to leave it here. Sharon, all yours. Lekin, Sharon, again, I'm going to ask you a quick question after you've done with showing people this phone. So here it is, the very, very beautiful OnePlus 10T with the absolutely amazing camera array. जिस तरीके से slope up करके यहाँ पे जाता है, that is beautiful. The curves out here are absolutely fantastic. जो इसके glass body है at the back. Just look at the way they've actually built this entire phone. It is really, really beautiful, right? Exactly. Also, we did a really good video on this, the vlog. Yes, I remember, yes. तो ये phone जो है ना बहुत tried and tested. I'm leaving it here. Now, Sharon, have fun with it because, you know, Sharon से अगर phone दूर ले जाओ तो depression में चले जाते हैं. So all yours. Obviously, okay? that's why have fun. So the design of the OnePlus 10T, total head turner hai, as you can see right now in a close-up. Very strong design language from OnePlus. You know, you really, really feel you've bought a top-of-the-line flagship. And you know, isme jo I'm going to show the actual AMOLED screen. So just take a look at this, right? AMOLED display isme jo hai is crisp, great color accuracy, brightness levels are over the top. You know, on a flight to Bombay, Jack Ryan का जो last season था, मैंने actually इस phone पे देखा था. And there were two people, of course, your privacy may be something that because people when they see this phone, they do want to look at your screen because it has that vibrancy. तो दो लोगों ने, हमेशा middle seat में फंस जाता हूँ, I don't know why. तो both people on my side were saying, which phone is it? Because the colors were absolutely incredible. The multimedia experience was fantastic. तो लोगों ने, this is a phone that is going to get you some attention. तो अगर आप उस टाइप के हैं कि you want your phone to be very mellow and no one should ask you कौन सा phone है, this is not the phone for you. If you want, people should absolutely 100% ask you what phone is this because of the back look and the screen. This is the phone to get. Okay, so now we're going to move on right now. Sharon, are you satisfied? Can I take the phone back? I'm never satisfied. Never satisfied, but Sharon, thamo. Okay, so OnePlus is a fantastic phone, design and everything else, and I'm going to move on now. We are now getting into the fourth phone, and this is the big B, I think, of all phones.
This is a phone that packs in the Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset. टोटल मक्खन परफॉर्मेंस आई मीन माखनी कर रहा है तो इसमें फोन में मक्खन परफॉर्मेंस तो होगी. चिपसेट इज फैंटास्टिक. द थर्मल्स ऑन दिस, द कंट्रोल ओवर द थर्मल्स, नो इश्यू एट ऑल. ये फोन हीट अप नहीं होगा. OnePlus 10T जो ना स्किप्ड ऑन वन थिंग एंड दैट इज कि उन्होंने स्लाइडर अलर्ट नहीं दिया. अब मैं ना इस इवेंट के लिए गया था व्हेन दे एक्चुअली लॉन्च्ड इट एंड आई आस्क्ड देम आउट देयर कि भाई OnePlus में अगर आप स्लाइडर अलर्ट नहीं डालोगे, why would you do it? They said because we did it क्योंकि हम लोग ने इसकी एंटेना परफॉर्मेंस, द स्क्रीन एंड द वे वी वांटेड टू ऐड एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ, दैट इज व्हाई वी डिड इट. मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ डोंट डू इट. एक आधा mAh कम हो जाए बैटरी का, एक आधा बार ड्रॉप हो जाए एंटेना का, वी लिव विद इट. सो दे डिड प्रॉमिस कि अब से दे विल नेवर एवर डू इट. बट a lot of people using it are saying कि, you know, that they're not missing that too much because they're getting incredible performance in a fantastic phone. So I have to tell you that this is a phone that is looking good, OnePlus 10T. आगे चलते हैं and I'm going to tell you a lot more about this phone. So let's talk about the RAM and storage, right? 16 GB RAM है, so this is absolute flagship level plus plus. 256 GB storage है. कैमरा, ट्रिपल कैमरा सिस्टम, 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन. एक वो टॉर्चर टेस्ट होता है ना मेरा, आपने मेरे सारे रिव्यूज में देखा होगा. नहीं देखा है तो स्टार्ट वाचिंग माय रिव्यूज एंड आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ देम हियर आल्सो. मैं लाइव में भी आपको एक्चुअल रिव्यूज करके दिखाऊंगा ऑफ फोन्स एंड हाउ आई विल डू दैट. दैट्स अ सीक्रेट दैट यू हैव टू फॉलो मी फॉर, सो डू मेक श्योर यू फॉलो. इसमें ना ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में आपको भी, इफ यू आर ट्राइंग आउट अ फोन ना, यू शुड डू दिस. आप फोन को पकड़िए एंड यू on a even हो uneven surface हो, start running. अब आप जो है जब आप जाओगे you will be feeling like okay I'm running and phone is going up and down. लेकिन जब आप फुटेज वापस देखेंगे ना, it should be smooth. जैसे कि आप स्केटिंग कर रहे हैं ना, it should come out like that and that is what we got from this one. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, 120 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू है. लॉट ऑफ पीपल अगेन आस्क मी कि FOV फील्ड ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ता है. देखो, इन एन अल्ट्रा वाइड लेंस व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू इज के वही कैमरा है, सिर्फ लेंस बदल रही है एंड आई एम ट्राइंग टू टेक अ पिक्चर एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ लॉट मोर. जैसे कि लेट्स से 8 पीपल इन अ ग्रुप, you usually take it, you have to keep going back. लेकिन once you go to the ultra wide lens with a 120 degree field of view, 8 या 16 लोग भी फिट आ जाएंगे. You go, you're out there, let's say you've come to Delhi or you've gone to Jaipur or something, beautiful forts, right? But वो पूरी की पूरी फोर्ट को लेना, those absolutely amazing structures, very difficult unless you have a great ultra wide. And ultra wide में एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, बिल्कुल सेंटर ऑफ द पिक्चर एंड द साइड्स ऑफ द पिक्चर में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ जाती है. आफ्टर ऑल इट इज डूइंग एवरीथिंग विद ऑप्टिक्स, राइट? इसमें ना सेंटर में प्रॉब्लम आई ना साइड्स में, देयर इज नो ब्लरिंग, इट्स अ वेरी वेरी क्रिस्प पिक्चर. बैटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, they actually did take away the alert slider to give you a bigger battery in a very thin phone. 4800 mAh, 150 watt charging, so charges like an absolute bullet. I remember हम लोग ने इसका एक टॉर्चर टेस्ट किया था. We tried to do that same thing, जैसे कि हम लोग के कई बार हो जाता है सुबह कि you wake up in the morning and you did put the charger, लेकिन आपने जो स्विच ऑन करना आप भूल गए और आपके पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे. तो वो टॉर्चर टेस्ट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली एंड शरुण टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, हम लोग ने किया था 10 मिनट का चार्ज, राइट? एंड वी सेड इफ somebody has got 10 minutes left to run to work or go somewhere else, क्या पूरा दिन फोन लास्ट करेगा? And it actually did, right? It will charge up to 60% or so in less than 10 minutes. Okay. And that is more than enough for a day's work. So 10 minute mein it was actually able to do that. So complete charge in about 20 minutes. So that is how well Charger it worked comes out. inside the box. One of the rarest things. देखा मैंने you know, as you'll meet as you'll meet शरुण, जैसे आप इनको और ज्यादा मिलेंगे, शरुण को एक चीज पूछें जरूर, 5 आपको जवाब मिलेंगे. So thank you शरुण. I'm going. Okay, let's move on now. You know, gaming performance जो है इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन if you want, I'm giving you a nice again pro tip कि if you want to amplify your Wi-Fi and Bluetooth connection, जो गेमिंग की लेटेंसी जो 60% तक हो जाता है ना when you're wearing Bluetooth earphones, you can actually do it by making sure that you don't have any interference between one thing and another. So that is something that you can do with this phone. It really really works very very well. You know, lots more of these tips and everything else in detail I will be giving you on these live streams for sure. और Wi-Fi अगर आपने बहुत ही अपना बेटर करना है, all you have to do
टेक आपका जो वाईफाई राउटर जहां पे भी पड़ा हुआ है, आप वाईफाई राउटर को इवन इफ यू जस्ट कैन elevate it by even 1 or 2 feet, you will be shocked to see that the Wi-Fi performance in your house will suddenly magically. कई लोग जो हैं Wi-Fi router बदल देते हैं. All you have to do is elevate it a little bit more. अगर आपके पास इस टेबल पे पड़ा हुआ है तो आप एक शेल्फ पे रख दीजिए और something a little higher. The higher you go with the Wi-Fi router, the faster you will get, and जितनी भी आपकी latency है, problems हैं, they will all go away. Chipset जो है is fantastic on this. It's an absolutely fantastic phone. Now let's move on to the price point. We want to do some questions as well. Okay, let's take a look at them. पूछा जा रहा है which phone am I talking about right now? So you must have just joined me right now, Mohit. नहीं, this is Riaz. This is the OnePlus 10T जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं with the red box. That is the one that actually works well. Brijesh says hi, hi. Okay, OnePlus. इसकी price point क्या है? I'm just revealing it right now. Samsung Galaxy, yes, it is correct. The person who's asked me the question, I think Manas has asked me कि Samsung S20 FE, absolutely that is, and he's a little shocked कि are you sure it is under 30,000 rupees? Yes, it is. Then we are moving on to a few other questions. iPhone का कुछ आप करेंगे शायद, अब मैंने आपको बताया एंड में वेट करिए, मे बी द सिक्स्थ वन इज एन आईफोन एट अ प्राइस दैट दे हैव नेवर डन बिफोर. आई रियली लाइक योर एक्सप्लेनेशन. थैंक यू पंकज. आई रियली लाइक द फैक्ट कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं. आई अप्रिशिएट योर अप्रिसिएशन. लॉट्स, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, नार्जो 50 5G यूजर के लिए है. Question asked by Bharat Bisht. Yes, absolutely. Narzo 50 Pro 5G जो है will work with 5G in India and abroad. इसमें वो सारे bands हैं, so no problem with that. What else do we have? We have. Will you be doing a lot more live? हाँ बिल्कुल, मैं ये जो है रेगुलरली एक दिन में मैंने 2 कर दिए हैं. सो यू नो आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव एंड विद ईच ऐसा वैल्यू मैं आपके लिए लेके आऊंगा इन टर्म्स ऑफ गैजेट्स, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन एवरी वन ऑफ देम. ओके, हेलो बहुत सारे हैं, तो हेलो टू ऑल ऑफ यू. सेल इज ऑन. यस, द सेल इज ऑन एंड प्राइस रिवील जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड अ लॉट ऑफ द प्राइसेस आर गेटिंग रिवील्ड, और 12 बजे यू विल बी एबल टू इवन बाय देम. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो कीप पुटिंग देम इनटू योर कार्ट एंड कीप देम देयर. ये बात जरूर है, लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दिस एंड आई एम सॉरी, दैट्स नॉट समथिंग आई कैन डू मच अबाउट, क्योंकि a lot of people are asking कि अगर इतने अच्छे phones, and especially since I've sorted them out into the best 5 for 5G right now at each price point, तो ये फोन जो है बहुत जल्दी चीज डील्स रन आउट एंड देयर आर नॉट इनफ फोन्स. सी दैट्स नॉट समथिंग आई कैन रियली हेल्प यू विद. ये जरूर है कि व्हेन द डील इज ग्रेट, द फोन इज ग्रेट एंड द होस्ट इज ग्रेट. सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट. व्हेन द डील इज ग्रेट एंड द फोन इज ग्रेट एंड द प्राइस इज ग्रेट, तो वो फिर चक्कर हो सकता है. सो दैट नाउ यू नो वो केबीसी स्टाइल फास्टर फिंगर फर्स्ट कुछ फोन्स के लिए तो पक्का होगा, बट दीज आर रियली गुड फोन्स एट रियली रियली ग्रेट प्राइसेस. तो मैं अब रिवील कर दूं आपको प्राइस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दिस. आई थिंक ये जो है फोन, if memory serves me right, and let me try and find out from my team. Oh, we have people now playing music for me also on this phone. By the way, good speaker. Let me find out. Lakshay from my team and my other crew members are here. Lakshay, am I right when I say कि OnePlus 10T की price कभी भी 49,999 से कम नहीं गिरी ना? It's always been that, right? Never. Okay, 2 people are saying never. So now prepare to be shocked. Drum roll, थोड़ा हम लोग मैं ही कर लूँ. Anybody? All right, we're getting a drum roll from a lot of people out here. Drum roll, the price point, deal price point is 44,999. For a phone this powerful, this good, this is a great, great price. I'm actually quite surprised. Can I take this one? Sure. मतलब ये you're not buying it at 44,000 here. वो Amazon पे करना पड़ेगा. नहीं मैं आपसे ले रहा हूँ. आप मेरे से ले रहे हो. Okay, let's move on now to the next phone. But remember, अगर follow नहीं किया तो क्या किया? You know, when you've come here to this live, believe me, every live I'll be doing, the amount of value, the amount of research, the kind of products that I'm going to bring you. आप जो है ना, absolutely blindly you can follow the advice and buy some of the best deals. So
फॉलो जरूर करिए, जस्ट टैप ऑन दैट स्क्रीन वेयर यू आर सीइंग द वीडियो, प्लस फॉलो का बटन जब आएगा उसको दबा दीजिए, एंड ऑल माय नोटिफिकेशंस एंड इवन आवर इंटरेक्शन chatting with you can all get started. And remember, 5 फोन यहाँ पे हैं, छठा फोन आएगा. Lot of people asking, is it the iPhone? Is it the iPhone? कर दूं रिवील? नहीं करूं? नहीं करूं? A little bit more. iPhone will reveal very soon. I will reveal the phone very soon. थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया because everybody is saying I'm not allowed to do it. लेकिन थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही गया होगा कि iPhone will release soon. मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कभी कभी डगमगा जाती है, लेकिन otherwise I think I have given it up. There will be something that you're really waiting for at a great price. But let's move on now to another phone. और ये फोन जो है आज ही इसकी बिग सेल शुरू हुई है, आज ही iQOO 11. अमेजिंग फोन, बीस्ट ऑफ अ डिवाइस. जब मैंने 12 बजे, आज जब हम लोग ने 11:30-12 बजे अपना लाइव शुरू किया था विद दिस, मैंने एक सलूट मारा था iQOO को कि भाई साहब कमाल कर दिया, टोटल बीस्ट ऑफ अ फोन, स्टेलर डिजाइन कॉम्प्लीमेंटेड बाय जो रेसिंग स्ट्राइप्स हैं एट द बैक. आई मीन दिस, इनकी जो कोलैबोरेशन है. शरण जी ये तो आपका काम है, मैं क्या बता रहा हूँ. देखो पहले ये तो दिखा दो लोगों को, BMW का मोटर स्पोर्ट के साथ जो उनके प्रीमियम पार्टनर हैं, एंड देन प्लीज डू शो देम the phone also. So phone with the racing stripes, leather यहाँ पे finish है इसकी, huge camera array at the back, and I'm going to talk about यहाँ पे, can you come in and show them a close up of V2 and ultra sensing. फिर इन दोनों के बारे हम लोग करेंगे यहाँ पे बात. लेकिन जब तक शरण आपको ये दिखा रहे हैं, I'm going to tell you that जब ये फोन लॉन्च हुआ था, this is the world's fastest smartphone at release time, India's fastest smartphone even right now. इसमें है Snapdragon 8 Generation 2 chipset, super fast. मतलब ये क्या रॉकेट बनाया है Snapdragon ने. डिस्प्ले LTPO OLED है, beautiful इनमें E6 इन्होंने डाला है, the technology that they've used for the AMOLED. ये जो है, लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज कीप आस्किंग कि जितना कॉम्प्लिकेटेड और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होगा उतनी हमारी बैटरी लाइफ जाएगी. लेकिन बिकॉज ऑफ द LTPO OLED एंड E6 टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ इतनी मेरे से सुन लो कि इसकी जो स्क्रीन है, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टेक्नोलॉजी, द E6 AMOLED डिस्प्ले, इट लुक्स वाइब्रेंट, लुक्स कलरफुल, बट इट ऑल्सो सेव्स अप टू 25% बैटरी देन अ E4 AMOLED display, और 1800 nits super brightness है. Should we show it? Come, Sharon. दिखाओ आप लोगों को the actual screen. I mean, it is absolutely stunning, right? Again, let's do the motorsport part. Nice, right? Exactly. Okay. Yeah, very very bright. तो इसमें जो है 1800 nits of peak brightness है. अब ये peak brightness, super brightness का आपको क्या फायदा है? When you're indoor, when you're in a darkly lit area, semi-lit area, anything indoor, आपको 18 nits of peak brightness नहीं जरूरत होगी, because that's like the sun shining on your face. लेकिन when you go outside or you're playing games which have a lot of action, you do need this kind of brightness. जब बहुत सारा कुछ हो रहा है मल्टीमीडिया में, but especially when you go out in the sunlight, कई बार आप जाते हैं and you can't read a thing. धूप अगर बिल्कुल सीधा फोन पे आती है, it's a bright day, आपको कुछ भी नहीं पड़ा जाता, even when you take the phone to 100%. इसके 1800 nits of peak brightness जो automatically will kick in, that is just unbelievable, because हम लोग ने तो इस फोन को टॉर्चर टेस्ट जब किया, हम लोग ने, we had the sunlight right on it and it had no problem, you could read everything crystal clear. 3 रेयर कैमरास हैं इसमें, 50 मेगापिक्सल मेन है, एक अल्ट्रा वाइड है, एक 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो है. And now I'm going to go to the V2. आप दिखा पाए थे शरण? Yep. Yeah, okay. So the V2 chip जो इसमें डाला है, ये एक स्पेशल चिप है. This is an add-on chip that has been put in. So Snapdragon का उन्होंने प्रोसेसर डाल दिया, जैसे कि लैपटॉप्स में एक CPU होता है, उसके साथ एक GPU होता है ना, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स में दे पुट इट. इसी तरीके से iQOO ने इसमें V2 चिप डाल दिया है इन दिस फोन, and this makes a huge difference in camera performance, graphics and gaming, क्योंकि इस V2 चिप का सिर्फ यही काम है, to improve those things. Especially iQOO और Vivo ने बैठ के they've actually developed this chip over millions of dollars they spent on this. In fact, उन्होंने एक पूरा का पूरा इवेंट किया था जहां पे उन्होंने V2 चिप की मेकिंग के बारे हम लोग को समझाया था. It is crazy good, right? Super efficient vapor chamber cooling है इसमें.
It's up 24,000 something millimeters square of the surface area of cooling. So even if you're gaming on this big time, because it is a super gaming phone, 5000 mAh की बैटरी इन्होंने डाल दी है, 120 वॉट चार्जिंग डाल दी है. 8 मिनट्स में, आज हम लोग ने जो लाइव सुबह किया था, हमने बोला चलो हर चीज अगर ब्रांड बोले और हम लोग समझ लें, तो हम लोग ने इसको, आई थिंक वी plugged it in for 5 minutes and got some 17 or 18% of battery, और वो भी at the 100% end, जहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है बैटरी की चार्जिंग. सो you can get 8 minutes में 50% and 100% is also really fast, right? So now I'm going to talk to you about some very interesting things that this phone can actually do. जो V2 chip है ना, this was a very interesting experience that I actually had with this phone. हम लोग ने इसको आज torture test किया था, and I think I have some of those pictures in this, right? Are these in this phone? Yes, it's in this. Okay. I want you to show people some of the pictures we took, right? Yeah. ये पिक्चर्स हम लोग ने ली हैं, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं आपको बता रहा था. कैन यू गेट दिस? हम लोग ने वी एक्चुअली वेंट डाउन अ स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस में जब आप नीचे जाते हैं ना, तो मूवमेंट बहुत होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन. इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जस्ट टेक अ लुक एट हाउ दैट वर्कड. सी, इट लुक्स लाइक आई एम जस्ट स्केटिंग डाउन. Very smooth. दिस इज द ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दैट इज एट वर्क. और आपको मैं एक और दिखाता हूँ. Why am I holding this gimbal? ये गुड क्वेश्चन. और ये जो है, आई एम रनिंग डाउन अ कॉरिडोर एंड काफी फास्ट. यू नो, आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड रनर एंड आई स्टिल एम. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ स्मूथ दिस लुक्ड. लुक एट दिस. लग रहा है जैसे स्केट बोर्ड पे या मैं स्लिप कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग डाउन. जस्ट लुक एट दैट स्मूथनेस. Also very fast. नॉट बैड एट ऑल. कभी किसी ने चैलेंज करना हो मेरे को टू 100 मीटर स्प्रिंट, डू गेट इन टच विद मी. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये फोन जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, इट्स जस्ट गॉट लॉन्च्ड, एंड पीपल विल बी लाइक, ओके अभी लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी हैज बीन अ बिग हिट, एंड बाय द वे वी आर कमिंग टू नो दैट इट्स अ बिग हिट सिंस मॉर्निंग, जब से सेल खुली है. फॉर अ फोन दैट इज लॉन्च्ड राइट नाउ, वेंट ऑन सेल जस्ट टुडे, there's going to be a drop in price. This phone now, जो 61,999 की प्राइस, the sale price is now going to be 54,999, and the phone just launched. Unbelievable. मतलब क्या क्या चीजें कर रहे हैं between the brands that work with Amazon. You know, every brand is doing something very special just for you. Okay, let's move on now. What else is there? There is a bonus phone. Yes, there is. आपको मैंने बोला था कि there will be a bonus phone. It's time for that surprise, the big reveal, a huge deal, right? And that is, ta-da! Yes, for everyone that was waiting for it, it is the iPhone 13. अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यू नो आईफोन 13 की प्राइस अभी भी बड़ी हाई है. आईफोन 13 शुड नाउ बिकम दैट काइंड ऑफ फोन वेयर एंट्री लेवल में, अगर हम लोग ने आईफोन आईओएस के वर्ल्ड में यू नो एंट्री पॉइंट लेनी है, शुड कम डाउन टू अ प्राइस पॉइंट दैट आई कैन ट्राई इट आउट, राइट? इट्स अ फोन दैट लिटरली टिक मार्क्स एवरीथिंग. कई लोग इंक्लूडिंग मी हैव बीन गिविंग दिस एडवाइस कि अगर आपके पास आईफोन 12 है तो 14 पे आप चले जाओ, लेकिन अगर आपके पास आईफोन 13 है तो आपके पास ऑलरेडी आईफोन 14 तो है, व्हाई वुड यू वांट टू अपग्रेड? तो बेसिकली यू आर गेटिंग द फोन व्हिच इज द आईफोन 14, and you're getting it at a price point which the iPhone 14 can never be, and now the price is going to drop even more. So this is an iPhone, the beautiful, iconic, super powerful A15 Bionic chip, जो कि that's the same, absolutely the same one on the iPhone 14 also, which means no compromise out there. One of the fastest phones in the world. इसकी जो gaming है, performance है, camera है, battery है, everything is fantastic. And then you know there is that thing ना, जो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास iPhone है, you don't have to explain who you are. एक image बन जाती है, right? Well, I don't care about the image. I care about the fact that this is a brilliant phone. आप literally iPhone 14 को ही खरीद रहे हैं, but at what price? इसके लिए ना you'll have to wait a little, because I'm not going to reveal that right now. मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि the iPhone 13 की price point that will actually be revealed at midnight is something that may have never happened before. तो Amazon Great Republic Day sale में when it goes live, it's coming at a price you've literally never seen before. So prepare to have your, फिर से वो meme कर दें, 1 second, let's go back. Prepare to have your mind blown
रिमेंबर सेल जो है स्टार्ट होगी टुनाइट ओनली फॉर प्राइम मेंबर्स, तो अगर आप एक प्राइम मेंबर नहीं है यू वोंट गेट अर्ली एक्सेस टू द डील, गेट दैट प्राइम मेंबरशिप, उसके साथ इतने सारे ऑल बेनिफिट्स भी हैं, आई हैव बीन वन फॉर as long as I can remember, and you should be that too. And I think the other thing along with getting prime membership and even before that is कि जो वीडियो आप अभी मेरा देख रहे हैं, just press on it, you'll get that yellow follow button. Make sure you follow me because यहाँ पे जो हम लोग ने 6 डील्स के बारे बात की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे बात की, but the kind of live I'm planning for you, and I'm going to be coming to you once, twice a week also, जिस तरीके का content, जिस तरीके के gadgets, accessories, add-ons I'm going to bring here, including I'm going to do a live on all the technology I use. मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ, मैं कौन सा हेडफोन यूज करता हूँ, मैं कौन सा टीवी यूज करता हूँ, all the tech I use, I'll have it out here. I'll show you 10 things on Amazon that no one has ever shown you. किसी ने आपको वो 10 insane amazing tech gadgets नहीं दिखाए होंगे. That and a whole lot more is what is going to be happening right here as soon as you follow me. लेकिन now I'm going to be anything else? Final round of chats. तो रोशन पांडे जी कह रहे हैं कि आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन, एंड रोशन दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर. आई एम गोइंग टू मेक श्योर यू बाय अ स्मार्टफोन, लेकिन नॉट ऑन कंपनी और ब्रांड हाइप. उसके ऊपर मैं आपको नहीं बाय करने दूंगा. आई विल मेक श्योर दैट यू बाय अ फोन दैट इज परफेक्ट फॉर यू. तो अगली बार जब आप कोई मैसेज भेजें यहाँ पे, टेल मी द फर्स्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट यू एक्चुअली, क्योंकि कॉम्प्लिकेट मत करिए द वे यू बाय अ फोन. 90% ऑफ द टाइम आप वही 2 फीचर्स को यूज करेंगे, बाकी सब जो है इज जस्ट 10%. सो डू लेट मी नो दैट एंड अ लिटिल बिट अबाउट मे बी द बजट. iPhone 13 प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज. अब सारा वही शुरू हो गया है. लुक, इट विल बी रिवील्ड एट नाइट. मैंने आपको फिर से ये बता दिया, इट इज गोइंग टू बी एट अ प्राइस आई थिंक दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर, सो दैट इज द ग्रेट पार्ट. Some people are asking me about advice on a motorcycle. One person is asking me about a car. वो सब भी कर लेंगे. I mean, I am asking Amazon they should start selling all that. तो वो भी हो जाएगा. iPhone 13 का page is not opening. I want to buy that right now. OnePlus अभी मैं खरीदना चाहता हूँ. Well, I think you'll get it only at 12 o'clock at the price that I revealed. थैंक यू. बड़ा अच्छे अच्छे लोग चीज़ें बोल रहे हैं. यहाँ तो लॉटरी लग गई है फोन्स की. अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि इन 6 फोन में से कौन सा खरीदूं. यू नो दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी एन इशू, बिकॉज यहाँ पे इफ यू कैन, यू नो, हम लोग ने डायलॉग शुरू कर दिया है, लेट्स डू दैट फॉलो पार्ट ऑफ इट. उसके बाद आप मेरे को कुछ भी यहाँ पे भेज सकते हैं. आई विल ट्राई एंड आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जब भी आपने मेरे से कुछ भी एडवाइस मांगनी है, जस्ट टेल मी द 1 or 2 फीचर्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू इन अ फोन एंड द प्राइस पॉइंट, एंड आई विल कम बैक टू यू विद द एग्जैक्ट फोन यू शुड बाय. और बहुत सारे लाइव्स में हम लोग सिर्फ यही करेंगे, आस्क माखनी एनीथिंग. स्टार्ट से लेके एंड तक आई ओनली टेक योर क्वेश्चन. आई प्रॉमिस यू आई विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आउट देयर. When will you do best camera phones? When will you do best gaming phones? Best phone under 25,000 rupees? क्या आप हमारे को गाइड करेंगे on exchange price? Look, all of these things are going to happen. आप कैसे नो कॉस्ट EMI ले सकते हैं, आप कैसे you can actually get the best. और जो आपने टाइटल्स बताए हैं, these are all great. I'm going to be doing all of these things. I think I'm running out of time right now, so I'm going to just carry on. But I'll try and answer most of the people on the chat one to one. तो जिनके मैं सवाल नहीं ले पाया आज because we had a lot of phones and content to cover, तो I'll try and answer each of you directly on the chat itself. लेकिन just to tell you कि जो आपने बताया है कि I should come back with best camera phones at each price point, best gaming phones, बैटरी के लिए बेस्ट कौन सा है, फास्ट चार्जिंग फोन्स कौन से अच्छे हैं, I'll be covering all of this in my live. All you have to do is, अब मैं आपको ना 3 सेकंड दे रहा हूं, and I'm going to count with you. I want you to press the follow button. So 1, 2, 3, and press on the screen and press the follow button. Amazing content starting right here on live with me, Rajiv Makhni. अब I want to just tell you a little bit because 5G के ऊपर I think बहुत सारे सवाल वहाँ पे आए हुए हैं. देखिए, upgrading to 5G is now very easy क्योंकि Amazon 5G का जो स्टोर है, they actually have a store which has 5G phones. 5G smartphones जो start करते हैं at less than 10,000 rupees. And remember again, जो वहाँ पे phones हैं, they will all work with
the Indian bands of 5G. बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स हैं और 5G स्मार्टफोन्स, फ्री ईयरफोन्स आपको मिल सकते हैं वर्थ up to about 899 rupees. Additional exchange है up to 10,000 rupees and up to 9 months no cost EMI है, and you can also use Amazon Pay, and rewards भी हैं up to 1,250 rupees on select models. So if you are thinking of a 5G phone, मैंने आपको यहाँ पे 6 दिखा दिए. Lots and lots of others that we can actually do, but at each price point these are some of the best हैं और but I didn't have time to bring it in, so we will be doing a lot more. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, do make sure that you do the follow part of it. So this is Rajiv Makhni now telling you that these are the 5 phones we've covered right now. The Realme 50 Narzo जो है Pro, we have the Redmi Note 12 5G, the Samsung S20 FE 5G जिसकी price point is crazy insane good. The OnePlus 10T, I think for the first time at this price point, शायद कभी भी आपको ये इस price point पे नहीं मिला. iQOO 11 जो कि with the BMW Motorsports stripes अभी launch हुआ है, and it is already available at a great price. And of course the iPhone 13. Remember, अगर आप ये खरीद रहे हैं, more or less buying an iPhone 14 at a price point which will be revealed very very soon. Thank you so much for tuning in. This is Rajiv Makhni जो ये live मैंने आपके साथ किया है. Remember, all the great stuff that I'm going to be bringing to you will happen right now. जाने से पहले वो गलती मत कर देना that you actually go away without following. Press the follow button. सिर्फ आपने tap करना है screen पे, plus follow करना है, and I promise you, you and me are going to be partners. I'm going to bring you the most amazing deals, great gadgets, best gadgets at the best price that are best only for you. जो बकवास चीजें हैं उनको धक्का मार के एक साइड पे कर देंगे. I'll see you next time. Thank you so much for tuning in. Bye for now.